Today we are going to discuss the lexical analyzer and its main functionality in some details. We know already what is lexical analyzer. We have studied lexical analyzer in our previous lecture, and we have also studied lexical analyzer when we studied the phases of compiler. So basically, a lexical analysis is the act of breaking down the source text into a set of words called tokens. And each token is found by matching the sequential characters to patrons. We will discuss what are the tokens, what is patron, what is sequential characters, and all the related stuff. So in general, programming languages are defined using context-free grammars, and these includes the regular languages. So basically, whenever the programming language is defined, it has some kind of grammar, and that specific grammar is used in lexical analyzer. So it can guess what is identifier, what is a keyword, and all that related stuff. We will discuss it later. So basically, all the tokens are defined with regular grammar. Like there must be some regular grammar by using which we can define tokens. It is not like that we just randomly pick up the words, we just read the streams and tokens are made. There are certain rules and regulation by which tokens are made. So the lexical analyzer identifies strings as tokens and sends them to syntax analyzer for parsing. When we go to the syntax analyzer, we actually make a parser tree. So it's called parsing, or this is something we will discuss in syntax analyzer. So basically यहाँ पे lexical analyzer strings को read करता है, उसके tokens बनाता है, और वो tokens आगे pass कर देता है syntax analyzer को. This is something we already know. So later you can see this is a typical you can say scanner or tokenizer. Actually this is a lexical analyzer and how it works. This is a very typical example. This is lexical specification. It means we give certain specification that how we are going to make tokens. This is a certain block of code, like if x is less than 1 and all that code, and here we can see that the tokens are made. Now in next slide we will see that how these are actually made. Let's say that how a typical lexical analyzer work. So we will just consider that we have a certain block of code, like if x is greater than 1, then x is equals to x plus 1, else x is equals to x minus 1, and our code is ended. So now if we are going to put this specific certain code into our lexical analyzer, and we want the lexical analyzer to make the tokens, how the tokens will be made, next it will be explained. See, if x is greater than 1, now you can see if is a keyword. This is left parenthesis. X is ID. ID means identifier. This greater than sign is operator. Then this 1 is a number. This is right parenthesis, and this is left brackets. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ की, कीवर्ड है, चाहे हमारे पास सिंबल है, ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर है, या जिसे आप वेरिएबल कहते हैं वो है, या नंबर है, हर एक स्पेसिफिक चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन वाज x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड देन वी हैव अ सेमीकोलन. अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? x इज अगेन id. id मीन्स identifier which is used in like whatever identifier we used, like name, address, all these things are identifiers. Then there we have equal sign. It is assignment operator. It is also called relational operator. Then x, again x is identifier. Plus sign is add operator. We can say that it is just an operator, and we can also say it is an add operator. So है ये basically operator,
के कैटेगरी में आ रहा है, तो हम इसे बहुत डिटेल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और विदाउट डिटेल हम इसको भी लिख सकते हैं. 1 इज़ अ नंबर एंड हेयर दिस इज़ सेमी कॉलन, और ये जो स्मॉल p लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स द पंचुएशन मार्क्स लाइक commas, semicolons, all or the colon. These are all punctuation marks. So lexical analyzer knows when the punctuation mark comes and it defines it like that. इसका token इसी तरह बनता है punctuation mark का. Then again हमारे पास next statement थी. अब इसमें हमारे पास है right bracket, else is again a keyword, and then we have left bracket. Then again we have x is equals to x minus 1 and semicolon. It is just like the same statement as we discussed above, only here we have subtraction operator and rest of the things are same. And then finally we have a left bracket. So now you can understand how the tokens are made. Like you can see how the tokens were made in the previous, like this example. So right now, next we will discuss that how these tokens are made, at once or one by one. So do not think that lexical analyzer reads the complete text and sends the stream of token. It is not so. Like the interaction between a lexical analyzer and a parser is depicted in the next picture. Parser, whenever I say parser, actually I mean syntax analyzer. So we will discuss a lot of parsing, top-down parsing, bottom-up parsing, and all that stuff when we will discuss the syntax analyzer. So right now, lexical analyzer and parser are in a relationship. They have a certain kind of interaction between them. So how is this interaction being performed? We have a certain source code. The source code is provided to the lexical analyzer. Lexical analyzer, when the parser say get the token, lexical analyzer reads the source program, gives the parser a token, and then one by one tokens are being provided. Then again the parser say get the next token, lexical analyzer again reads the character or stream of characters, strings, whatsoever we are doing, and then again it takes up the token is given to the parser. Side by side we are managing the symbol table. In symbol table, we store the information about the identifiers, the keywords, and all the certain things. We have discussed it and we will discuss it, and we will actually discuss a lot about symbol table. And we will have some certain description of it in the end of the lecture. So only on getting requests from the parser, the lexical analyzer creates the next token and sends the next token to the parser. So if token is identifier or a procedure, then the lexical analyzer stores that token in the symbol table. Like if it is an identifier, obviously it will have some type, some value, and all the related stuff. So that is why all the related information is stored into the symbol table. So we will take an example that how one by one tokens are made, not at once. For example, if there is a source text, let's say a plus b. So the lexical analyzer does not read a plus b at once and sends the token as a is identifier. So we say id, plus is a plus sign, like its operator, and b is again identifier. No, it never works like that. How it actually works, let's say we have a plus b. So on getting the first request from the parser, the lexical analyzer reads the first string a, recognizes that as a token, identifier id. यानी यहाँ पे जब उसने सबसे पहले a को रीड किया है, a को रीड करके उसे पता चला है कि ये एक आइडेंटिफायर है, उसने उसे एज अ टोकन आइडेंटिफाई किया है, उसको रिकग्नाइज किया है कि वो एक्चुअली खुद एक आइडेंटिफायर है, यानी जिसे आप वेरिएबल कहते हैं या आइडेंटिफायर कहते हैं. स्टोर्स इट इनटू द सिंबल टेबल, क्योंकि अब अगर आइडेंटिफायर है तो उसकी या तो अभी कोई वैल्यू होगी या इन फ्यूचर हमारे पास कोई वैल्यू आएगी. लाइक मे बी द यूजर गिव्स द इनपुट, और मे बी वी हैव डिफाइंड इट लाइक इंट a is equals to 10 in our program. So it means there will be certain information about the identifier a, so that would be stored into the symbol table.
and after that it will send the token. What is the token? ID. ID means identifier to the parser. What will be the next thing? On next request, it only reads plus and sends the operator as it is as token. अब प्लस साइन है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर नहीं करनी होती, इसलिए ना तो सिंबल टेबल में उसकी कोई मेन एंट्री होती है, वो सिंपली सेंड ऑपरेटर एज अ टोकन, ऑपरेटर का एज इट इज एक टोकन बन जाता है और हम उसको सेंड कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास लास्ट थिंग है, ऑन गेटिंग द थर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्सर द लेक्सिकल एनालाइजर रीड्स द स्ट्रिंग बी. वही सारी चीज़ रिपीट होगी. अब रिकग्नाइज दैट एज टोकन आइडेंटिफायर. अब ये भी एक आइडेंटिफायर है, तो उसको हमने आईडी से रिप्रेजेंट किया है. स्टोर करेंगे हम इसको सिंबल टेबल में, स्टोर्स इट इनटू द सिंबल टेबल एंड सेंड्स द टोकन आईडी टू द पार्सर. So when talking about lexical analysis, most often we use the following terms like lexeme, tokens, patron. यानी जब हमने पीछे भी बात की, हमने कहा कि tokens बन रहे हैं, इसके अलावा हम lexemes की बात करते हैं और patron की बात करते हैं, और patron को हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था. So what is actually a token, what is lexeme and what is patron? So we will discuss it right now कि अब ये किस तरीके से होता है. So basically, first of all, we will talk about the tokens. Token is a group of characters with logical meaning. अब token एक group of character है जिसका कोई ना कोई proper logical meaning है, and token is logical building block of the language. अब actually token क्या होते हैं कि जब हमारे पास कोई भी certain statement आती है, for example, हमारे पास कोई statement है int a is equals to 10. So int a is equals to 10. ये तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं? चीज़ें यूज़ हो रही हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, numbers, operators. So these identifiers, keywords, number, operators are the building block of any language, and whenever we encounter any certain statement of any language, कोई source language है और उससे हमें कोई certain statement हमने ली है, तो वो building blocks को ही pick करके बनी हुई है. हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के टोकन बना देते हैं विद लॉजिकल मीनिंग. कि अगर हमारे पास x लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये एक आइडेंटिफायर है. अगर int लिखा हुआ है, if लिखा हुआ है, else लिखा हुआ है, तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इन सर्टन लैंग्वेज दिस इज अ कीवर्ड. इसी तरह नंबर आ जाए तो हम उसे एज ए नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई आइडेंटिफायर आ जाए तो उसे एज आईडी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और टोकन्स एक्चुअली जब आप कोई स्टेटमेंट रीड करते हैं तो उसमें से उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पिक करके आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक यूज हो रहा है. देन वी हैव पैटर्न. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट इज़ अ रूल दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टोकन्स. अब आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका टोकन कौन सा है? हाउ डू यू गेट टू नो दैट what certain thing is a token? Like, how do you know what is a keyword in certain language? How do you know what is identifier in a certain language? Like, different languages have different naming schemes. हमारे पास उसमें वेरिएबल नेमिंग के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, डिफाइन करने का तरीका मुख्तलिफ है. तो हाउ डू वी कम टू नो? सो बेसिकली वी कम टू नो अबाउट फ्रॉम द रूल्स. सो रूल्स को हम एक्चुअली पैटर्न कहते हैं कि किस स्पेसिफिक पैटर्न पे एक चीज़ चल रही है. हर लैंग्वेज का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जिसे आप सिंटैक्स कहते हैं. सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन. We have studied in theory of automata regular expressions. Regular expressions are used to define the languages. So basically regular expression क्या करता था कि certain बता रहा है कि आपके start में A आ रहा है, फिर B आ रहा है और फिर end पे फिर A आ रहा है. It means ABA was a certain syntax or certain pattern of specific language. So यहाँ पे भी जब हमने patterns को define करना है तो ये generally हम regular expressions को भी use करते हैं. That's very easy to do. So input stream of characters are matched with the patterns and tokens are identified. यानी हम इनपुट स्ट्रीम को मैच करते हैं अपने पैटर्न के साथ कि वो पैटर्न में कौन सी वाली जगह पे फिट इन हो रही है. आइडेंटिफाई वाली जगह पे फिट इन हो रही है. दिस इज ऑपरेटर, दिस इज व्हाटसोएवर इट इज. सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक पैटर्न और रूल फॉर आइडेंटिफायर ID is that it should start with a letter followed by any number of letters or digits. This can be given by a regular expression
and this is regular expression, A to Z, capital A to Z, small a to z, then A to Z, capital A to Z, small a to z, and 0 to 9, and is static. This is clean clear, and you better know what does clean clear mean. So यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि whenever we say that हमारे पास कोई सोर्स प्रोग्राम है, कोई सर्टन स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो कोई चीज़ लिखी हुई है वो आइडेंटिफायर है, यानी हम आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या वेरिएबल नेम को आप कह लें, उससे भी आइडेंटिफाई, दे आर सेम थिंग्स. अब हमें सर्टन पैटर्न पता चल गया एक सर्टन लैंग्वेज का, लेट्स से सी का कर लें आप, कि इट शुड वट एवर स्टार्ट्स विद अ लेटर, यानी कि आपका जो भी आइडेंटिफायर है इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर. नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. और लेटर से स्टार्ट होने के बाद फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स. इसका मतलब स्टार्ट में लाजमी तौर पे हमारे पास कोई लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक लेटर, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, और फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स. ये क्लीन क्लियर है या ये स्टैटिक है, इसका मतलब है कि इसकी पार 0 भी हो सकती है, और अगर इसकी पार 0 हो तो सिर्फ ए आए यहाँ पे. लेट से मैंने यहाँ से ए पिक किया है, तो ए एक आइडेंटिफायर है, बी एक आइडेंटिफायर है, यानी अल्फ़ाबेट सेपरेटली भी आइडेंटिफायर है. यहाँ से अगर ए आ जाए, यहाँ से फिर मैं बी पिक कर लूँ, और 0 to 9 में से मैं आपके पास 1 पिक कर लूँ, तो ए बी 1 बनेगा मेरे पास. दैट इज़ अगेन अ वैलिड आइडेंटिफायर. सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक्सप्लेन्स कि हमारे पास आइडेंटिफायर क्या हो सकता है. सो यूजिंग दिस पैटर्न द गिवन इनपुट स्ट्रिंग्स XYZ, अब XYZ could be identifier, yes it is a right identifier, ABCD, A7 B82, international value, name of the student. Now these all are identified as token ID. ID mean identifier, again I am explaining. So अगर हम पिछली डेफिनेशन को माइंड में रखें तो ये सारे के सारे वैलिड टोकन्स हैं, ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, और टोकन को पता होगा कि ऐसी किसी भी चीज़ को उसने एज ए आइडेंटिफायर पिक करना है, तो जब भी वो सोर्स कोड को रीड करेगा वो उसे एज आइडेंटिफायर पिक करेगा. Then we have lexeme. It is the actual text or character stream that matches with patron and is recognized as a token. अब जो भी हम टोकन बनाते हैं उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो लेक्सीम कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल int is identified as token keyword. int क्या है, अगर int को हम रिकग्नाइज करें, उसका टोकन बनाएं, तो int is a reserved word, it is a keyword. Here int is lexeme and keyword is token, यानी ये int actually lexeme है जो actual character या actual text है, टोकन से जुड़ा हुआ actual text जो है उसे हम lexeme कहते हैं. int is lexeme and keyword, यानी इसका टोकन क्या बना था, keyword. So keyword is a token. So I hope you understand what is lexeme and what is token. So now we will see this. This is some example. Let's say कि हमारे पास एग्जाम्पल थी float key is equals to 1.2 semicolon. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. What would be the lexemes? Float is a lexeme, key is a lexeme, this equal sign is a lexeme, 1.2 is a lexeme, and this semicolon is a lexeme. What are the tokens? Now float का token बनेगा the keyword, key is actually identifier, equal sign is a relational operator or assignment operator. Basically relational operator जो हमारे पास पूरा group होता है, तो group of relational operator they consist equal sign, so that is why we can say it is a relational operator or it is an assignment operator. Then 1.2 is the number and this semicolon is a punctuation mark. So these are all lexemes, these are the tokens. And what is patron? Patron is what is the rule or what is regulation. How do we came to know that these could be the tokens? And so keyword, like reserved keyword, float is a reserved keyword, identifier, a letter followed by any number of letters or digits. We know that this pattern is already defined. These are relational operators, so relational operators are already defined in the language. Now 1.2 is a number, so
any numeric constant is allowed in the language, so that is why we know that it is a number. And semicolon is a punctuation mark used in the language, and it has certain meaning, that termination. So we know that there are certain meanings of these things too, and these are actually used. This all is actually present in the description of the language. So हमें इतना मसला नहीं होता, हमें पता चल जाता है ये सारी चीज़ें किस तरह कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं. और आई होप अब आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. सो डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी. Design complexity of a lexical analyzer is mainly dependent on the language conventions. कि आपकी लैंग्वेज में कितनी कन्वेंशन है, लाइक आपकी लैंग्वेज किस तरीके से डिफाइन हुई है, इस पर डिपेंड करती है डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी आपके लेक्सिकल एनालाइजर की. लाइक फॉर एग्जांपल, इन मैनी लैंग्वेज सर्टन स्ट्रिंग्स आर रिजर्व्ड. दैट मीन्स दैट देयर मीनिंग इज प्री डिफाइंड एंड कैन नॉट बी यूज्ड. अब सर्टन लैंग्वेजेस में, मैनी लैंग्वेजेस में होता क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, तो हमें इतने प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें पहले से पता है उनका क्या मीनिंग है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. लेक्सिकल एनालाइजर easily identifies them and puts them in the certain category. जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर उसको बहुत easily उसमें पुट कर देते हैं. लेकिन अभी आप सोचें that now in certain languages keywords are not reserved. अब अगर keywords reserved नहीं हैं, so in such cases lexical analyzer has to distinguish between the keyword and the identifier, and rules for recognizing keywords from the identifiers are quite complicated. So कुछ languages ऐसी हैं जिनके rules and regulations ऐसे हैं कि keyword और reserved नहीं होते, लेकिन certain आप ये समझ लें कि कीवर्ड के लिए सर्टन रूल्स हैं, जैसे आइडेंटिफायर के लिए सर्टन रूल्स हैं, जिससे मैंने पीछे बात की. एक रेगुलर एक्सप्रेशन था फॉर योर आइडेंटिफायर. सिमिलरली अगर इसी तरह का कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो कीवर्ड्स के लिए भी, तो अब आपके लिए वैसे अगर कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व्ड हो तो रिजर्व्ड से मैच करना इज ईजियर रादर देन कि आपके पास सर्टन रूल्स हों, तो फिर वो इतने सारे रूल्स हर चीज़ के बन जाते हैं कि आपका लेक्सिकल एनालाइजर का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स फॉर द टोकन्स. यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट व्हेन अ टोकन रिप्रेजेंट्स मेनी लेक्सीम्स, additional information must be provided by the scanner or lexical analyzer. अच्छा, lexical analyzer को हम scanner भी कहते हैं, ये आपको already पता है. About a particular lexeme. For example, token ID matches with X, Y or Z. ID like identifier. अब X भी identifier है, Y भी identifier है, Z भी identifier है. So how will you get to know that which is this whenever the ID token is being written? So which ID do you mean? Which identifier are you talking about? But it is essential for next phases to know which string is actually matched. हमें पता होना चाहिए कि X, Y या Z में से हम किसकी बात कर रहे हैं जब हम आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं. So to overcome this problem that can arise in the future, generally tokens will have only one attribute, that is pointer to the symbol table entry. अब क्या होगा कि हमारे पास टोकन्स के साथ एक और एट्रीब्यूट होगा, और वो एट्रीब्यूट एक्चुअली एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा कि ये टोकन सिंबल टेबल में किस जगह पे है. अब जब वो पॉइंटर उस सिंबल टेबल की एंट्री को पॉइंट आउट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हो ID और फिर कॉमा लगा के 1 लिखा हो, तो हम 1 वाली जगह पे जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमने जिस ID की बात की है उसकी वैल्यू, टाइप और सारी चीज़ें क्या हैं. हेयर एंट्री इन द सिंबल टेबल कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन टोकन. अब ये हमारे पास एक सिंबल टेबल है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वेरिएबल नेम, उसका एड्रेस, टाइप, डायमेंशन, लाइन डिक्लेयर्ड, लाइंस रेफरेंस्ड और पॉइंटर, हर चीज़ गिवन है. तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है, लाइक अगर हमारे पास कंपनी एक आइडेंटिफायर है, लिखा हो ID और कॉमा लगा के लिखा हो 7, तो जब हम ID की बात करें और आगे 7 उसका एट्रीब्यूट हो, तो हम एग्जैक्टली जाके 7 को देखेंगे और हमें सब पता चल जाएगा कि उसका एड्रेस, टाइप, डायमेंशन
और लाइन डिक्लेयर्ड और लाइन रेफरेंस्ड सारी चीज़ें क्या हैं। एक और डिस्क्रिप्शन, ये टिपिकल सिंबल टेबल है, इसी तरह इसको भी देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेट्स से वी हैव अ नेम, सो हमें पता चलेगा कि अच्छा नेम है, आई थिंक इसमें कुछ एक चीज़ शायद मिसिंग है। बहरहाल ये नेम है, तो नेम हमारे पास उसका यानी नाम था हमारे पास, ID लाइक लेट्स से ID1, ID,1, तो 1 वाली जगह पे हमें पता है कि नाम जो है वेरिएबल का वो नेम है, या आइडेंटिफायर का टाइप करेक्टर है, साइज 20 है, डायमेंशंस उसकी, लाइंस डिक्लेयर्ड, लाइंस ऑफ यूजेस, एड्रेस एंड ऑल दैट रिलेटेड स्टफ इज ऑलरेडी रिटन। सो this is the end of the lecture. I hope you understand all this stuff, and we will keep on discussing a lot of other things about lexical analyzer in the next lectures, because it has a lot of description. I already explained that all the phases of compilers have a lot of details. So if you have any questions, so you can comment, and you can also mail me your questions. So I will highly recommend your feedback. Thank you very much.